Hello kids, how are you all? I hope you are doing well. Today we discuss chapter 10 measurements. Here is some warm questions. Match the following units. You have to match the units with proper standard units. Okay student, here is let's know about measurement and its need, measurement in early age, standard and non-standard units of measurement, measuring length, mass, capacity, time and temperature. Okay, here is measurements and its need. In everyday life, measurements are often necessary. We need weights and measures for many other day-to-day activities. For instances, the amount of cloth required for a dress, the weight of a grocery and vegetable to be bought, the amount of sugar needed for a cup of tea, or the amount of petrol to fill in a car. सो स्टूडेंट ये क्या है, हमें जो मेजरमेंट की जो नीड है वो हमारी डेली लाइफ में होती है। जैसे हमें पता करना होता है कि हमें कितना कपड़ा चाहिए कोई ड्रेस बनाने के लिए, हमें कितनी सब्जी चाहिए या कितने कप पानी आपको चाहिए, दूध चाहिए चाय बनाने के लिए, कितना पेट्रोल आपको अपनी कार में फिल करना है। सो ये क्या है बच्चा, हमारी डेली लाइफ है और डेली लाइफ में हमें मेजरमेंट्स की जरूरत होती है। ओके, हियर इज measurement. Measurement is the action of measuring something. We can measure time, weight, distance, height, temperature, length, speed and more. Measurement क्या है बच्चा? Measuring something, किसी चीज को measure करना, और हम time, weight, distance, height इन सबको measure कर सकते हैं। If we didn't have measurement, it would be very difficult to know when to go to school, how much you weigh or how cold or warm it is outside. That means अगर हम नहीं measure कर पाते तो मुश्किल होता है कि स्कूल किस टाइम जाना है, हमें कितना वेट है, बाहर कितनी ठंड है या कितनी गर्मी है। ओके, लाइफ इज सो मच इजियर व्हेन वी नो हाउ टू मेजर थिंग्स एंड दैट इज व्हाई measurement is so important. Every measurement involves a number and a unit. Assume that your classroom measures 10 meters in length. The number here is 10 and the unit is meter. तो बच्चे हमारी लाइफ जो है बहुत इजी हो गई है जब से हमने चीजों को मेजर करना सीखा है। अब सपोज करो आपकी जो क्लासरूम है उसमें जो लेंथ है दैट इज 10 मीटर। तो 10 क्या है बच्चे, नंबर है, और मीटर क्या है, आपकी यूनिट है। ओके, हियर इज मेजरमेंट इन अर्ली एज। इन एंशिएंट टाइम people used to measure the length of an object using parts of the body or object from surroundings. So जो बच्चा एंशिएंट टाइम में क्या करते थे, या तो बॉडी पार्ट का यूज करते थे या फिर किसी ऑब्जेक्ट का यूज करते थे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए। Here is hand span, cubit और foot span were used to measure the length. So ये हमारे बॉडी पार्ट्स है जो हम किसके यूज करते थे एंशिएंट टाइम में लेंथ को मेजर करने के लिए। Seeds, grains और stones were used for weights. और ग्रेन, सीड और स्टोन किससे यूज होते थे बच्चे, वेट को मेजर करने के लिए। टाइम वाज मेजर्ड बाय लुकिंग एट द सन, मून एंड अदर हेवनली बॉडीज। और सन मून को देख के हम टाइम को मेजर करते थे। ओके, these weights and measures did not give the correct measurement because of the difference in size of seeds, stones and people's hand and feet. So to avoid this need to have a fixed unit for measuring different things was introduced. Now let's learn about the units we use to measure things. So बच्चे क्या है, ये सब चीजें फिक्स नहीं थी। किसी की हैंड की जो यूनिट है वो अलग आती थी, किसी के सीड ज्यादा, किसी के कम, साइज, शेप एंड सो मेनी थिंग्स। सो इन सबको अवॉइड करने के लिए हमें एक फिक्स्ड यूनिट चाहिए मेजरमेंट की, जिसका बाद में हमें जो है मिली, हम सीखेंगे कि वो यूनिट्स क्या है। Here is standard and non-standard units. The first one is standard units. Standard units are the units everyone uses to measure something specific. We all need to speak the same language to understand each other. So we use hours, minutes and seconds to measure time. Ounces and pounds to measure weight, degrees to measure temperature and inches and feet to measure length और height. बच्चे स्टैंडर्ड यूनिट वो यूनिट है जो हम सब लोग यूज करते हैं। जैसे अगर मैं हिंदी बोल रही हूँ आप सबको समझ आता है, इंग्लिश समझ आती है, लेकिन अगर हम फ्रेंच में बात करें क्या आपको समझ आएगा? नहीं। सो दैट्स वाई एक दूसरे को समझने के लिए लैंग्वेज सेम होनी चाहिए। दैट्स हाउ हम टाइम को मेजर करने के लिए आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स यूज करते हैं। आउंसेस एंड पॉन्ड्स वेट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। डिग्री से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं और इंचेस और फीट्स में हम लेंथ मेजर करते हैं। ओके, हियर इज
Look here, scale, pounds, measuring tape in inches. Here is scales, ounces, ruler in inches, thermometer in degree. These are some instruments and standard unit of measurement. Here is non-standard units are random things that people choose to measure with. For example, I can use a paper clip to measure my notebook or yarn to measure my brother's height. I can use my hand to know if something is heavier or lighter, and I can use my fingers to measure my friend's arm. So these are something non-standard. बच्चे हम कुछ भी ऐसी कोई चीज यूज करते हैं किसी चीज को मेजर करने के लिए. Okay. The units for the following are, here is finding out temperature of a patient having fever, Celsius degree. अगर किसी को फीवर है तो हम किस में मेजर करते हैं टेम्परेचर बच्चा? डिग्री सेल्सियस. Water in a big tank, kiloliters. Distance between your school and house, kilometers. Water in a water bottle, milliliters. Mass of the earth, kilograms. So these are some units. Okay, here is measurement of length. Length measures the distance between 2 points. It is the size or the measure of how long something is. It is measured with a metric ruler or an inch ruler. So बच्चे जो हम लेंथ मेजर करते हैं वो किसी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस होती है, और साइज और जो मेजर करते हैं वो कैसे कितना लॉन्ग है कैसे करते हैं, या तो मीट्रिक स्केल से या फिर इंच रूलर से. ओके. सम यूनिट्स आर मेजरिंग लेंथ आर millimeter, centimeter, meter, kilometer. Small lengths are measured in centimeter, whereas long lengths are measured in meters. Long lengths और distances are measured in kilometers. So बच्चे जो आपकी small units हैं लेंथ की उसे हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, और जो थोड़ा लॉन्ग लेंथ है उन्हें मीटर्स में, और जो डिस्टेंस होती है उसको किलोमीटर्स में. Here is 10 millimeter is equals to 1 centimeter. 100 centimeter is equals to 1 meter, and 1000 meters is equals to 1 kilometer. Okay, these are the units. Here is using a ruler, measuring tape and meter scale. A ruler is a tool used to measure lengths and draw straight lines. In school and colleges, we use meter scales of 1 meter length, 30 centimeter scales and 15 centimeter scale. So बच्चे रूलर एक क्या है आपका टूल है जिससे हम लेंथ मेजर करते हैं और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं. स्कूल कॉलेजेस में हम 1 मीटर लेंथ की स्केल यूज करते हैं, दैट मीन्स 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर. We use 30 centimeter scale and 15 centimeter scale in our daily routine work to draw line segments of given measure and to measure the line segments. हम 30 centimeter और 15 centimeter scale अपनी daily routine में use करते हैं. The small scales of measure 30 centimeter or 15 centimeter are used to measure the lengths of line segments, chalk pieces, the length of a pencil, etc. So आप इन स्केल्स की हेल्प से बच्चा चॉक पीस या लेंथ ऑफ योर पेंसिल और लाइन सेगमेंट की लेंथ को मेजर कर सकते हैं. Objects on a ruler are measured by putting one end of the object on zero and aligning the object in straight along the edge of the ruler. The mark where the other end of the object ends is the length of the object. That means बच्चे जो आपका रूलर दैट मीन्स जो स्केल होती है आप उस पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, जीरो से स्टार्टिंग जहां पे आपकी ऑब्जेक्ट एंड होती है वो उसकी लेंथ होती है. ओके. Do you know? Height can be defined as the distance between the lowest and the highest point of a person or an object. और आपकी हाइट क्या होती है? किसी भी दो पॉइंट्स दैट मीन्स लोवेस्ट और हाईएस्ट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस. ओके. Here is, look at this picture. That's how you have to measure the length with the help of a ruler. To measuring long distance like length and breadth of a park or field, we use measuring tapes. It is 50 meter, 100 meter or 250 meter or more in length. So बच्चे अगर किसी लॉन्ग डिस्टेंस को हमें मेजर करना है तो हम क्या करते हैं? मेजरिंग टेप्स लेते हैं, दैट इज 50 मीटर, 100 मीटर, 250 मीटर. Tailors have small measuring tape to measure the length of cloth. They also have meter rod which is 1 meter long. It is also used to measure the length of cloth. The tapes and meter rod or meter scale are used to measure the length and breadth of a room, table, blackboard, etc. and also the length of piece of a string at a piece of cloth. So बच्चे आपका जो टेलर है वो भी मेजरिंग टेप यूज करता है, लेकिन उसकी जो मेजरिंग टेप है वो छोटी होती है. वो मीटर रोड का भी यूज करते हैं जो कितने मीटर लॉन्ग होती है बच्चा? 1 मीटर.
और आपकी जो मीटर रोड या मीटर स्केल है या मेजरिंग टेप है उससे की हेल्प से आप अपनी रूम, अपनी टेबल, ब्लैक बोर्ड इन सब की लेंथ को भी मेजर कर सकते हैं. Here is we have check and weight. As we already read about these things, so you can do it by yourself. Here is measurement of mass. Mass is defined as the amount of matter in an object. Some units of mass are milligrams, grams and kilograms. So बच्चे आपका जो mass है वो क्या define होता है? Amount of a matter in an object. और जो आपकी units है वो milligrams, grams और kilograms. 1000 milligrams is equals to 1 gram and 1000 grams is equals to 1 kilogram. Whereas small masses are measured in grams while large masses are measured in kilograms. So आपके small that means कम जो mass है उसको measure करते हैं grams में और जो ज़्यादा mass है उसको हम kilograms में measure करते हैं. The mass of an object is measured using a weighing balance or weighing machine. Weight is different from mass. Weight is the measure of the force of gravity on an object. Weight बच्चा mass से different होता है और weight को measure क्या करते हैं? जो force of gravity है किसी object पे. The mass of an object will never change, but the weight of an item can change based on its location. बच्चे mass कभी भी object का change नहीं होता है, लेकिन weight किसी भी item का change हो सकता है. कैसे? वो depend करता है उसकी location में. For example, you may weigh 50 kg on Earth. But in outer space you would be weightless as there is no gravity. That means suppose आपका weight कितना है 50 kg, but अगर आप outer space में जाओगे तो आप weightless बन जाओगे. क्यों बच्चे? क्योंकि वहाँ gravity नहीं है. However, you will always have the same mass on Earth as you have in outer space. और आपका जो mass है वो अर्थ पे और outer space पे बच्चा same होगा. Okay, here is use of weighing balance. The things are weighed with the help of a balance. Generally, this balance is called a common balance. और जो balance से हम चीजें measure करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? Weighing balance. और वो common balance है. Look at this picture. आप सबने ये देखा होगा बच्चे. Here is we place the weight in one pen and objects or commodities in another pen. हम एक pen में क्या करते हैं? Weight रखते हैं. दूसरे pen में objects रखते हैं. Vegetable vendor place the vegetable on one plate and put the weight on another plate. जो vendors होते हैं वो एक side vegetable रखते हैं, दूसरी side weight रखते हैं. Plate and put the weight on another plate of the balance to measure the mass of the vegetable in kilograms and grams. Okay, student, here is measurement of capacity. Capacity is defined as the amount of liquid that a container can hold. तो बच्चे capacity क्या होती है? वो amount of liquid जो एक container hold कर सकता है. For instance, the amount of water in a bucket or a bottle is its capacity. Some units of measuring capacity are liters, milliliters, kiloliters. Look here, it is a measuring cylinder. 1000 milliliters is equals to 1 liter. 1000 liters is equals to 1 kiloliter. Thus, for smaller capacities, we use milliliters and liter, and for larger capacities we use kiloliter. तो बच्चे जो स्मॉलर कैपेसिटी है उनके लिए मिलीलीटर और लीटर यूज करते हैं और जो लार्ज कैपेसिटी होती है उनके लिए हम किलोलीटर यूज करते हैं. A measuring cylinder is used to measure capacity. और एक measuring cylinder यूज होता है किस लिए? कैपेसिटी को मेजर करने के लिए. Here is measurement of time. Time is the measurement of period between two actions of events. It is measured using a clock or a watch. Some units to measure time are seconds, minutes and hour respectively. So बच्चे टाइम क्या होता है? किसी दो एक्शन के बीच का टाइम पीरियड. दैट मीन्स जो गैप है वो टाइम होता है और उसको हम क्लॉक और वॉच की हेल्प से मेजर कर सकते हैं. और आपको पता है सबको टाइम की यूनिट सेकेंड, मिनट एंड आवर होती है. हियर इज 60 सेकेंड 1 मिनट, 60 मिनट 1 आवर. Very short duration or period of time such as the time taken to blink your eyes or your pulse rate are measured in seconds. So but आप आई blink करते हैं, आपका pulse rate उसे हम किस में measure करते हैं? Seconds में. Long duration such as time taken to have breakfast or to take longer duration such as duration of a school or a duration of a movie are measured in hours. So बच्चे जो long duration है उसको हम किस में measure करते हैं? Hours में. Look at these pictures. Here is watch, wall clock and stopwatch. Watches, wall clocks, stopwatches, etc. are used to measure time. A clock has 3 hands, hour, minute and second. Okay, student. Here is measurement of temperature.
Temperature tells how hot or cold an object. A clinical thermometer is used to measure the temperature of our body when we have fever. The mercury column inside the thermometer moves along the scale printed on the thermometer and indicates the body temperature. A digital thermometer displays the temperature in digits in a small screen. Normal body temperature is 98.6 degrees Fahrenheit or 37 degrees Celsius. Look at this picture, mercury thermometer and digital thermometer. तो बच्चे टेम्परेचर क्या होता है, कितना ठंडा या कितना गर्म कोई आपकी ऑब्जेक्ट है या आपकी वेदर है, कुछ भी उसको मेजर किसकी हेल्प से करते हैं, थर्मोमीटर की हेल्प से। जैसे जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उससे हम अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं। होता क्या है, जब आप उसे अपने टंग से टच कराते हैं कुछ देर बाद जो आपका मरकरी है बच्चे वो लेवल अप हो जाता है और आपकी बॉडी के टेम्परेचर को शो करता है। ओके, हियर इज we have check and mate. As we already read about these things, you can do it by yourself. Here is what we learned from this chapter. Now we will discuss it in a nutshell. Length measures the distance between 2 points. The unit that are used for the measurement of the length are kilometer, meter and centimeter. So बच्चे length को जो measure करते हैं वो किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर में करते हैं. Length is measured with metric ruler or an inch ruler. Here is mass defined as the amount of matter in an object. The standard international system of units of mass is kilogram and grams. So बच्चे mass क्या है, amount of matter किसी object में और उसकी standard unit क्या है, kilograms and grams. A beam balance is used to measure mass. और एक beam balance हम use करते हैं mass को measure करने के लिए. Capacity is defined as the amount of liquid that a container can hold. The units for measuring capacity are liter, milliliter and kiloliter. तो बच्चे कैपेसिटी कोई भी कंटेनर जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड को होल्ड कर सकता है वो होती है, दैट इज लीटर, मिलीलीटर और किलोलीटर उसकी क्या होते हैं बच्चा, यूनिट्स होती हैं. हियर इज अ मेजरिंग सिलेंडर इज यूज्ड टू मेजर कैपेसिटी. टाइम इज द मेजरमेंट ऑफ पीरियड बिटवीन टू एक्शंस और इवेंट्स. तो जो टाइम ऑफ मेजरमेंट है वो क्या है बच्चे, दो एक्शन या किसी इवेंट के बीच का टाइम. इट इज मेजर्ड यूजिंग अ क्लॉक और अ वॉच. Some units to measure time or seconds, minutes and hours. Temperature tell us how hot or cold an object is. It is measured in degree Celsius and degree Fahrenheit. जो टेम्परेचर है बच्चे वो बताता है कोई ऑब्जेक्ट कितनी ठंडी या कितनी गर्म है और उसको मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में. A thermometer is used to measure temperature. Here is some keywords. Hand spin, the measure from the tip of your thumb to the tip of little finger और a fully open palm. Okay, that means आपके इस तरह से अगर आप किसी चीज को मेजर करते हैं like this, so this is the hand spin. Foot spin, the measure from the big toe to the end of the heel. जब आप अपनी big toe से end of the heel तक किसी चीज को मेजर करते हैं, that is foot spin. Here is cubit, the measure from your elbow to the tip of your fingers. That means from here to here. This is cubit. Unit, a fixed quantity used for measuring an unknown quantity. कोई fixed quantity जिससे हम किसी unknown quantity को measure करते हैं. Thank you students. We will meet again in the next chapter.